Yes. Hello everyone. Is the audio and video clear? We'll start in next 1 minute. Chalega. Good morning everyone. So from today onwards we are starting an important session with respect to current affairs, which is important for mains 23, and these topics are even important for अगर आप 2024 का attempt दे रहे हो. So it's going to be an interesting session where we'll be covering current affairs topics which are in news for last 1.5 years के जो भी most important current affairs है, and I'll tell you with proof also कि क्यों यहाँ से questions आने के chances ज़्यादा है. These sessions are scientifically designed. तो सबसे important है these sessions are scientifically designed. Second important है what you learn from these sessions. You would not only get content तो मिलेगा ही इस session से. Secondly, you'll get templates with respect to structuring कैसा करना है. Third is we'll make you think. It is not just going to be a spoon feeding sessions रहने वाले नहीं है. You'll have to think in every sessions. तो जो brainstorming part है, because in exam you have to think. So these sessions would make you think in the class. Secondly, it would give you that confidence that you can write a very good answer and your topics are covered in a very quick format. Next important thing I would like to tell you through this session, what would happen is you will get inputs with respect to interlinkages of the topics. Interlinkages की कैसे हम GS2 के topics GS4 में से connect कर सकते हैं, 3 के topic 1 के साथ connect कर सकते हैं. तो ये interlinkages भी बहुत important है. तो इस sessions के साथ वो भी आपके concepts पूरे cover होने वाले हैं. So these sessions are going to be held on a regular basis. मैं आपको बताऊंगा कि next session कब होगा. ये Telegram group through भी आपको update मिलेंगे. Secondly, हम जो भी इस साल 23 के लिए students exam दे रहे हैं उनका एक special group बनाया है. आप description में उसको ज्वाइन कर सकते हो. एंड आई वुड लाइक टू टेल यू वी आर देयर टू सपोर्ट यू टिल योर मेंस एग्जामिनेशन. बहुत अमेजिंग है एंड यू विल सी अ डिफरेंस इन योर प्रिपरेशन. इस सेशंस के अलावा आपको कोई चीज देखने की जरूरत नहीं है. वन स्टॉप सॉल्यूशन रहने वाला है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस 23 एंड इवन फॉर 24, बिकॉज इस सेशन से आपको आइडिया आएगा कि मेंस के टॉपिक्स किस तरीके से पढ़ने हैं. तो विदाउट फर्दर वेस्टिंग एनी मोमेंट विल स्टार्ट टुडे सेशन. एक इंपॉर्टेंट है कि एंश्योर कीजिए कि पेन एंड पेपर साथ में है, बिकॉज यू विल हैव टू थिंक, यू हैव टू राइट. क्योंकि अंटिल यू जस्ट लिसन देयर इज नो यूज. इन द क्लास यू विल लिसन, you will think and you will write so that it goes into your permanent memory. इसके बाद ये टॉपिक आपको बाद में पढ़ने की जरूरत नहीं है. Everything would be in your brain. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है. रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सारे संकल्प मेंस बैच स्टूडेंट्स से एंड ऑल द स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग फॉर 2023 टू मेक श्योर इसको आपका मतलब ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है. एंड लिखिए, मेक नोट्स, एवरीवन हैज टू मेक नोट्स. ठीक है, चलेगा. इन टुडे सेशन today's session I thought of starting with an important topic जहां मुझे लगता है कि 100% चांस है यहां से क्वेश्चन आने का. एंड द रीजन इज आई वुड लाइक टू टेल यू, इफ यू सी PIB एंड दिस लॉट ऑफ न्यूज विद रिस्पेक्ट टू नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी हो गया, यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म हो गया, यूलिप हो गया, डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्विस हो गया. सेकेंडली इफ यू सी द हिंदू के आर्टिकल्स भी देखोगे विद रिस्पेक्ट टू PM गति शक्ति, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, देयर सो मेनी आर्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू दैट. ठीक है, बहुत सारे आर्टिकल्स है. तो आई एम श्योर कि देयर इज गोइंग टू बी अ क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, लॉजिस्टिक सेक्टर एंड हाउ इट इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म आवर इकोनॉमी. तो इस पर डेफिनेटली क्वेश्चन आने वाला है एंड लिख के लो. इवन वो क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आएगा, इनडायरेक्टली आएगा. एंड जो आज मैं पॉइंट्स बताऊंगा विद रिस्पेक्ट टू दिस सेक्टर, यू कैन यूज इट इन एवरी पार्ट of your answer. I'll tell you how you can use this logistic sector in agriculture, how you can use it into ethics, how you can use it in GS1 also. तो मैं ये टॉपिक ऐसा है कि ये क्वेश्चन 100% आएगा, क्योंकि अगर न्यूज आर्टिकल देखो तो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी पर बहुत सारे क्वेश्चंस है, गति शक्ति पर इकोनॉमिक सर्वे में है क्वेश्चंस. तो टॉपिक्स कवर्ड है. तो दैट इज व्हाई दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर मेंस 2023 एंड दिस वी आर गोइंग टू कवर टुडे. वी आर गोइंग टू कवर वन मोर टॉपिक, लेकिन दिस इज द फर्स्ट थिंग. सो बिफोर स्टार्टिंग, it's not going to be a one way class कि मैं सिखाते जाऊंगा एंड आप लिखते जाओगे, ऐसे नहीं होगा. पहले आपको सोचना पड़ेगा. अगर आपको नहीं भी आता है सोचना, just try to think on the questions which I give you and then I'll teach the entire topic you will be writing. ठीक है, first process is you have to think, because there are so many things into your brain जो आ सकते हैं, you know the things, but there has to be a forcible what do you say intervention to bring those out. So first is think. I'll give you 3 minutes to think. Just think, then I'll teach the topic. Okay? First thing, those who are new to this brainstorming session, I would request everyone to first think on the topic. So what do you understand by logistic sector? Why it is important to India?
या सिग्निफिकेंट क्या है इसका इंपॉर्टेंस। थर्ड इज इश्यूज क्या है with respect to logistics sector in India, and fourth and most important is what steps government has taken. What steps government has taken. Take 3 minutes. Take 3 minutes and think over it. Think over it. So whenever you make notes, हमारा टारगेट यूपीएससी का एक फॉर्म मतलब स्टैंडर्डाइजेशन है कि 2/3 पार्ट में यू विल बी राइटिंग वॉट एवर आई टीच यू, 1/3 पार्ट में यू विल बी ब्रेनस्टॉर्मिंग, यू विल बी थिंकिंग ऑन दिस टॉपिक. सो थिंक, एवरीवन थिंक. ठीक है. No one is going to write in the comment section. Everyone is going to think for next 3 minutes. Make sure you think. Do not write. Brainstorm over these topics. What do you understand by logistics sector? Why it is important और significance क्या है? Issues क्या है? And steps क्या लेने चाहिए? Steps government ने क्या लिए हैं? Think over it. Yes, you have to integrate with Sankalp. Yes. चलेगा. So basically there's one more reason. मैंने already बता दिया कि economic survey में there's been a huge focus on logistics sector. Secondly, PIB and various initiatives. There's one more important reason why logistics sector can come in reason, because recently logistic performance index was released by World Bank and India improved its ranking from 44 to now it is under 38th रैंक है विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स. तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता चाहिए. सो बेसिकली व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय लॉजिस्टिक सेक्टर? व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय लॉजिस्टिक सेक्टर? ठीक है. कैन यू टेल मी लॉजिस्टिक सेक्टर में क्या है? लॉजिस्टिक सेक्टर, व्हाट इंक्लूड्स लॉजिस्टिक सेक्टर? यूजुअली द कॉन्सेप्ट इज लॉजिस्टिक सेक्टर मींस what people think is only with respect to transportation. It is not transportation. So logistics sector includes a holistic concept where transportation is one part, but logistics sector includes transportation, it includes warehousing, it includes cold storage, it includes inventory management, it includes supply chain management, it includes material handling, it includes packaging. So logistics sector includes all these subsectors, and logistics sector is known as lifeline of economy. It is known as arteries and veins of our economy. ठीक है. So this sector helps us to transport goods from one place to another place. So जो भी इसके बीच में जो भी factors है, all those are included into logistics sector. जब भी so whenever you are writing about logistics sector, it should not be just restricted to transportation sector. The reason what I am trying to tell you, because India
में सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन में इश्यूज नहीं है, इंडिया के लॉजिस्टिक सेक्टर में वेयर हाउसिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इश्यूज. इंडिया में सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड द बैक एंड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इश्यूज. तो द रीजन व्हाई आई एम ट्राइंग टू टेल यू दिस, क्योंकि यूपीएससी इस तरीके को क्वेश्चन पूछेगा, यू विल बी राइटिंग ओनली ऑन ट्रांसपोर्टेशन एंड यू विल नॉट बी गेटिंग मार्क्स. यहां इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसपोर्टेशन जब भी आप देखोगे, इन लॉजिस्टिक सेक्टर देखोगे, तो ये वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया, all these are important. Material handling हो गया, ठीक है, पैकेजिंग, that is also part of, ठीक है, that is also part of logistics sector. ठीक है. With respect to India, now जब भी अगर आप लॉजिस्टिक सेक्टर पर क्वेश्चन कर रहे हो, यू कैन स्टार्ट योर क्वेश्चन दैट लॉजिस्टिक सेक्टर इंक्लूड्स ऑल दी सेक्टर्स एंड इट इज ऑल्सो द लाइफलाइन ऑफ आवर इकोनॉमी. सेकेंडली, यू कैन ऑल्सो से दैट recently the World Bank announced logistic performance index and India ranked 135 with respect to that. ठीक है, तो ये इससे आप स्टार्ट कर सकते हो, डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हो. नेक्स्ट कम व्हाई इट इज सिग्निफिकेंस. सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. सिग्निफिकेंस क्वेश्चन हमेशा आएगा, व्हाई लॉजिस्टिक सेक्टर पर गवर्नमेंट इतना फोकस कर रहा है, क्यों फोकस कर रहा है. ठीक है, why it is a significant? Because number one fact you should know that it is close to a $200 billion industry, $200 billion industries, and it contributes close to 14% of our GDP. ये facts लिखना बहुत जरूरी है. All these facts are taken from newspaper The Hindu. ठीक है, सर्वे से लिया है. ठीक है, ठीक है. Measurement and grading is also part of logistics. ठीक है. Secondly, it employs close to 22 million people are directly and indirectly employed in this sector, and close to 1.5 million more, 1.5 to 1.3 to 1.5 million more would be added to it by 2025. ठीक है, ठीक है. Third important thing why you need to know is because it's a job creating sector. That's why it's also important to India, because India's unemployment rate is close to 8% presently. If you want to tackle unemployment, this sector is an important sector where we'll be able to generate points. Third important thing is the growth of other sectors is linked to logistics sector. Which other sectors you can link here? So agriculture में सबसे important है, you have supply chain management in your GS3 syllabus. That is completely logistics sector. Until we have strong supply chain management, food processing industry cannot grow. The farmers would not get the best price if their products are not able to reach the market in a time. We have seen close to 20 to 25% of food wastage because of lack of supply chain management, effective supply chain management. तो agriculture sector is closely linked to logistics sector. GS3 का टॉपिक है, लेकिन GS what do you say, agriculture से भी लिंक कर सकते हो. ठीक है. Next is tourism. Definitely, until we have strong logistic sectors, roads, highways, railways, airports, can we have tourism? We cannot have tourism. Logistic sector को कैसे लिंक कर सकते हो society से? What we require for national integration is movement of people from one place to another place. Why we are not able to go very easily to northeast, or northeast people are not coming because of lack of logistic sector. So logistics sector helps in social perspective also, because it helps in national integration. Until people move from one place to another, there won't be social cohesion. Third, next important is, it is also important for defense sector, right? If we have long duration to move our weapons and troops from one place to another, definitely we'll fall back. So it's not just linked to one sector. Another reason why logistics sector is important is for government. If you have seen, GS4 में एक important topic है, efficient utilization of resources हो गया, या quality service delivery. Do you remember quality service delivery है syllabus में topic? Do tell me, quality service delivery? Definitely. If we want to improve our service delivery quality of the government, we need to have strong logistics. अगर FCI, imagine a case of FCI, huge amount of food grains are wasted. There's leakages. अगर हमारा logistics sector ठीक है, तो क्या होगा? Quality of service delivery बढ़ेगी. Quality of service delivery बढ़ेगी, FCI से the food
grains are reaching the right targeted families, definitely क्या होगा? There would be less corruption. There would be quality of service delivery. So for that also, government also needs, it's not just for private sector, but government also, they require a strong logistics sector. Strong logistics. ठीक है? तो ये सबसे important है. नहीं, for growth of e-commerce industry, right? E-commerce works on logistics sector. E-commerce works on logistics sector. E-commerce work on logistics sector. ठीक है? So this is an important factor where you do not look it from narrow perspective. Logistics sector helps in agriculture, it helps in society perspective. Tourism हो गया, GS4 में आप quality of service delivery के साथ लिंक कर सकते हो. ठीक है? Quality of service delivery के साथ लिंक कर सकते हो. Next is, once we have strong logistics sector, India में presently logistic cost is close to 14%, which is one of the highest logistic cost. The aim of national logistic policy is to bring it to 8%. When our costs, our logistic costs are high, what our product, are they competitive? No, they are not competitive. We are able to compete them in the international market? No, because our logistic cost is very high. Logistic cost is very high. Logistic cost is very high. So what we required is, for why logistics sector is important, it is important for exports, it is important for making our products competitive. It is important for making our products competitive. ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट है, टूरिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टूरिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एनी अदर रीजन वेयर यू कैन थिंक व्हाई लॉजिस्टिक सेक्टर इज इंपॉर्टेंट? एनी अदर रीजन? Any other reason where you can think logistics sector is important? Why it is significant? Until we cannot be a 5 trillion economy until we have strong logistics. It is a core of manufacturing sector. It is, logistics sector forms the core of manufacturing sector. Manufacturing sector में क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए रॉ मटेरियल्स लगते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए रॉ मटेरियल फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेस एंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन इट टू द कंज्यूमर्स, दोनों में लॉजिस्टिक्स लगता है. तो बेसिकली इफ यू सी लॉजिस्टिक सेक्टर, यहां एग्रीकल्चर भी लिंक्ड है, यहां मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी लिंक्ड है, एंड यहां सर्विस सेक्टर भी लिंक्ड है. बिकॉज लॉजिस्टिक सेक्टर में फॉर डेटा मैनेजमेंट, फॉर सप्लाई चेन मैनेजमेंट, व्हाट वी रिक्वायर इज ठीक, ठीक. And combat inflation, very good, combat inflation. It would help in combat inflation also. जब prices कम होंगे तो definitely will be able to combat inflation. See, now you've got an idea यार, मैं इसको कहाँ use कर सकता हूँ. It should not be narrow perspective. जब logistics sector आए तभी मैं इसको use करूंगा. I'll be using this concept of logistics sector कहाँ use करूंगा? For MSME के growth के लिए. We cannot have a stronger MSME until we have stronger logistics sector. For manufacturing sector में मैं use करूंगा, मैं इसको use करूंगा, e-commerce industry में भी use करूंगा, मैं tourism में भी use करूंगा इसको. ठीक है, exports के लिए भी, making our exports, how do you improve our export? Is logistics. So the aim is not to use it from a narrow perspective, is from broader perspective, and this is an important topic definitely, because it's linked to every section of the society, every section of the economy से linked है. ठीक है, disaster management में if we do not have a strong logistics sector, our response time would be more, it would lead to lot of losses. Disaster management में what you require is a strong chain. Definitely. So thinking बढ़ रही है. Are you able to think in a holistic way? This is the first lecture. You will find it difficult to adjust to the new scheme, but this is the right process. अगर process right है तो result आएगा. Process right है तो result आएगा. अगर process गलत है, अगर आप सिर्फ narrow perspective से पढ़ रहे हो, उसको link ही नहीं कर पा रहे हो, सोच ही नहीं पा रहे हो, तो definitely exam में कम points आएंगे. जितने ज्यादा points है link कर पाओगे. ठीक, चलेगा. ठीक है, next is, what are the challenges in logistics sector in India? क्या challenges? Can anyone tell me? क्या challenges?
चले, ठीक. इफ यू राइट इन दिस फॉर्मेट, डिफिकल्टी हो सकती है रिमेम्बरिंग को, एग्जामिनर को भी डिफिकल्ट हो सकता है टू गेट टू अंडरस्टैंड योर points in a very quick format. If you break down into 2-3 important subsets, so if you can say there is an infrastructure issues, there is administrative issues, and there is structural issues, right? Do not go with my handwriting. I am a doctor, I can write anyway. आपको एग्जाम में अच्छा लिखना है, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक. अंडरस्टैंड हो रहा है? आर यू एबल टू गेट? सो जब भी आप चैलेंजेस लिख रहे हो या फिर सिग्निफिकेंस लिख रहे हो, यू कैन, इफ यू आर एबल टू ब्रेक डाउन इनटू अ in a broader, the examiner would have understood. See, with respect to infrastructure, you should know infrastructure में क्या issues है. There has been over dependence on road infrastructure for movement of cargo. 60% of the cargo moves through road, and सिर्फ 27% moves through rail. Whereas in the Western countries, in the last 50 years, the cargo movement through rail has increased. India mein opposite has happened. Opposite has happened. We are more dependent on roads. We are more dependent on roads. Over reliance on road transportation. And what this does is, जब over reliance on roads है, तो क्या होगा? We have more chances of accidents. It is a slow way of transportation. It is not financially sustainable also. The cost of transportation through road is much more higher. It is close to 3 times higher compared to rail. With respect to climate change also, with respect to more amount of CO2 is released. ठीक है? So what we have done is, our policies have, there's been a policy failure where we have not ensured कि cargo movement, हमने उस पर फोकस नहीं किया, ठीक है? Our speed is also very less, ठीक है? इंडिया में एवरेज स्पीड मतलब ऑफ द ट्रक्स इज क्लोज टू 20 to 40 kilometers per hour एवरेज अगर हमने कंसिडर करें, एंड फॉर इन अ डे दे ट्रैवल ओनली 250 to 400 kilometers, ठीक है? which is very less. So first important issues is there's been over dependence on road infrastructure, ठीक है? इंफ्रास्ट्रक्चर में second issues with respect to finance. The funding for infrastructure projects have been majorly government driven. There has been less private investment in infrastructure projects, in logistic infrastructure, ठीक है? Third is, we lack multimodal transportation system. We lack multimodal transportation system, ठीक है? Next is, we have, with respect to ports, what we have is congested ports and high turnaround time in the ports. There's lack of proper infrastructure at the ports. High turnaround time. Our warehouse capacity and cold storage capacity is only half of what is required. So infrastructure में we lack, there is a 50% deficiency in warehouse and cold storages. There's lack of effective evacuation infrastructure. ठीक है? There's poor digitalization
poor digitalization of logistic sector. Every ministry runs its own digital portal, तो लॉजिस्टिक ये ठीक है. तो ये हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इशू. अब हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज में क्या लिखोगे? यहां गवर्नमेंट रेगुलेशंस बहुत ज्यादा है. सेकेंडली, there are close to 20 government agencies, 37 export councils, 500 certifications. If you want to export something or if you want to be in the logistics sector, what we have seen is there is a lot of regulatory framework. Multiple regulations are there. Every state has a different regulations. And what it leads to is regulatory cholesterol. Administrative issues में transportation, what we have is a different ministry. अब तक क्या होता था? मतलब presently also we have Ministry of Aviation, we have Ministry of Road Transportation, Ministry of Railways. So instead of that, what we should have is we do not have a uniform policy making. Every ministry is making its independent policy with respect to transportation. Where in Northeast, if we are not able to ensure कि rail and road transportation difficult है, तो there we need to focus on aviation sector. So this type of uniform policy would happen through uniform ministry. Presently, there is a fragmented policy making, and lack of coordination. Next आता है structural issues में majorly only 10% is an organized sector. इसमें logistics से 90% is informal, unorganized sector में है. There's no standardization of processes. There's no benchmarking. There's lack of skilled labors. Lack of skilled labors. ठीक है? Any other? So now ये सारे issues थे till last year. Now the government has started taking the steps, but still they have not. मतलब ये सारी reasons की वजह से what happened is, ठीक है, समझ आ गया. तो जब भी आप अगर किसी challenges के बारे में लिख रहे हो या issues के बारे में लिख रहे हो, you can use this framework where you are trying to segregate it into structural issues, administrative issues, infrastructure issues, financial हो सकता है, financial issues हो सकता है. ठीक. अब government has been taking various steps to deal with these issues. बहुत सारे स्टेप्स ले रहे हैं. उसमें सबसे प्रोमिनेंट है, जब भी आप गवर्नमेंट के स्टेप्स लिख रहे हो ना, इफ यू हैव दिस स्टेप्स लिखते समय हमेशा इंश्योर कीजिए कि अगर याद नहीं आ रहा है कोई स्टेप्स, तो ये 3 फ्रेमवर्क में आप स्टेप्स लिखिए. डेफिनेटली आपको बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे. फर्स्ट इज यू कैन राइट अबाउट एनी इनिशिएटिव्स, स्कीम्स. तो हियर यू कैन राइट अबाउट स्कीम्स हो गया, प्रोग्राम्स हो गया गवर्नमेंट के. Next is you can think about legal measures and policy measures. And last is reforms कुछ लाए हैं with respect to administration. So if you think in this 3 format, definitely points आएंगे. ठीक है? Complex tax regime भी लिख सकते हो. So let's look into, पहले मैं broad format में बताता हूँ, then I'll discuss everything in a detailed format. ठीक है? अगर हम legal and policy में देखेंगे तो what we have is
Now what we have is an important policy, national logistic policy, which was introduced in 22 September and which is important for mains. And ठीक है, क्या इसके पॉइंट्स हम डिटेल में देखेंगे. दैट इज अ लीगल मेजर्स. वी हैव नेशनल इनलैंड वाटरवेज बिल एन एक्ट नाउ. दैट वाज अ लीगल मेजर्स टू इंप्रूव inland waterways, to bring a standardization in the inland waterways sector. ठीक है, inland waterways schemes में what you can write is PM Gati Shakti. Here what we are trying to do is bring all the ministries which are involved in logistics sector under one platform, in one platform, so that they can take a holistic approach. They can take a integrated and coordinated policy making हो सकती है under PM Gati Shakti. We have national infrastructure pipeline which also has come under PM Gati Shakti and indirectly supporting all the infrastructure projects with respect to logistics sector. We have Bharat Mala, we have Sagar Mala, we have Udan scheme, we have dedicated freight corridors, we have multimodal logistic parks which government is planning to do. And what are these multimodal logistic parks? The aim is to have 35 plus multimodal logistic parks. Multimodal. We are ठीक है. So schemes आ गया तो automatically you will understand कि यार क्या क्या schemes लिए. Laws, the examiner would think यार ये तो बहुत logical सोच रहा है. Very good. Krishi Sampada Yojana, Pradhan Mantri Krishi Sampada Yojana, which is linked to food processing industry. And when Pradhan Mantri Krishi Sampada Yojana does not focus just on promoting food processing industry, it also focuses on back-end infrastructure. It focuses on developing cold storages. Pradhan Mantri Krishi Sampada Yojana is an important scheme because it focuses on building cold storages. It focuses on building warehouses. Kisan Rail, very good, amazing. ठीक है. So what you can think is, अगर next time कोई topics पर अगर आपको लिखना है आंसर, way forward लिखना है, if you write in this format, the examiner would think यार ये बहुत इसकी clarity है thoughts में, इसकी clarity है. ठीक है. And through this current affairs session, our thinking process would change, your structuring of the answers would change. You'll be able to think in a holistic format. लॉजिस्टिक सेक्टर स्ट्रांग है तो क्या होगा? लीकेजेस कम होंगे, करप्शन कम होगा, वेस्टेजेस कम होंगे, इफिशिएंसी बढ़ेगी. तो दैट पॉइंट कैन आल्सो बी एडेड. कृषि उड़ान, ठीक है. इतने पॉइंट्स लिख दो. रिफॉर्म्स में हम आगे देखेंगे कि रिफॉर्म्स में गवर्नमेंट जीएसटी एक्ट, ई वे बिल्स, व्हाट इज इट? जीएसटी, यूनिफॉर्मिटी इन द टैक्सेशन सिस्टम. यूनिफॉर्मिटी, जीएसटी एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट. ठीक है. यहां रिफॉर्म्स में व्हाट वी हैव इज नाउ लॉजिस्टिक डेटा बैंक हो गया. वी आर ट्राइंग टू डेवलप लॉजिस्टिक डेटा बैंक प्रोजेक्ट वेयर थ्रू दिस वी आर ट्राइंग टू ensure that the movement of containers is tracked through RFID. ठीक है, ये इसमें और मैं बताऊंगा. ठीक है. अब coming back to national logistic policy. See, the aim of this logistic policy is to bring the logistic cost from 14% to 8% by 2030. And it also ensures कि हमारा जो logistic performance index है, it should come under it should be less than 25 rank. मतलब top 25 में आना चाहिए हमारा. अभी 38 है. ठीक है. वेरी गुड. लीड्स इंडेक्स रिफॉर्म्स में लिख सकते हो. लीड्स इंडेक्स वेयर वी आर ट्राइंग टू प्रमोट कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म अमंग स्टेट्स टू इंप्रूव लॉजिस्टिक सेक्टर. लीड्स इंडेक्स. ठीक, लीड्स इंडेक्स. ठीक है. तो ये दो एम है, ठीक है, of national logistic policy. And what it plans to do is it wants to ensure that the logistics sector works on the principles of interdisciplinary functioning,
ठीक है, interdisciplinary function. Secondly, it also wants to ensure the logistic sector, there is complete digitalization of logistic sector, complete digitalization. There is uniformity in the logistic sector, uniformity, and there is multimodal approach. Multimodal approach. So what is basically multimodal approaches? Imagine you are sitting in New Delhi and you want to send something to Northeast, a state of Manipur. So what would happen earlier is you would send it through either completely through road or completely through rail or completely through airways. But all of these have their certain deficiencies. कहीं कहीं road नहीं है, कहीं कहीं airways है. So in multimodal transportation, the transportation from one place to other place happens through the best possible way. So from Delhi to Allahabad through road, then Allahabad to a part of West Bengal where through inland waterways, वहां से फिर airway. So transportation through multiple modes where it is in an integrated format and in an efficient way. Efficient way. ठीक है. तो national logistic policy के क्या बोलते हैं, क्या building blocks है? First is it wants to develop digital integration system. लिख के लो, digital integration system. ठीक है. So digital integration system में क्या होगा? All the data of various ministries which are involved in transportation, which are involved in logistics such as commerce, transportation, aviation, railways, roadways, सारे ministries का data जो होगा वो there would be uniformity and everything would come under one platform. So the data would be digitalized and would be brought under one platform. So ये digital क्या होगा? Information integration system से. Next would be unified logistic interface platform. Unified logistic interface platform. यहाँ क्या होगा? All the services which are provided by different sectors of logistic, all the services which are provided by different subparts of logistic sector, जैसे अगर transportation, airways, transportation, railways, warehouse facility, cold storage, all these services would be brought under one portal. So you can get access to all the services of logistics sector in one portal. Third initiative under national logistic policy is ease of logistic services. E-logs भी बोलते हैं, ease of logistic services. It is a digital platform where the logistics sector companies can interact with government agencies for speedy resolution of issues. E-logs initiative. Ease of logistic services. And last is comprehensive logistic action plan, where the aim is of this comprehensive logistic action plan is the aim of this is to standardize logistic asset, standardization of physical assets, लिख के लो, benchmarking of services, human resource development, benchmarking of services, standardization of physical assets, development of logistic parks. ठीक है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एम है ऑफ दिस. ठीक है. अंडर second important is you should know that under Pradhan Mantri Gati Shakti mission, where we are trying to have an integrated planning and implementation of infrastructure. ठीक है. Where there would be integrated planning and implementation of all the initiatives taken by various ministries, so that there is no
fragmented policy, mean there is coherence in their action. इसके अंदर we have launched one more important initiative that we are launching multimodal logistic park. ठीक है. So multimodal logistic park क्या होता है? ये ऐसी जगह है where you will find warehouse, where you will find cold storage, where you will have cargo terminals, where you will have मतलब truck terminals होंगे, commercial facilities होंगे. So it is a one step where you will have all the provisions with respect to logistics sector में जो भी necessary चीजें हैं, you will have all these services at one place, one place. ठीक है. Government is also trying to bring national logistic efficiency and advancement, predictability and safety act. National logistic efficiency and advancement, predictability and safety act. ठीक है. So that इस एक्ट से क्या होगा? There would be less regulation and there would be uniform definition of logistics sector. ठीक है. One more important reforms में आप लिख सकते हो, logistics sector has been included in the list of logistics sector को किसमें इन्वॉल्व किया गया है, so that उसमें you can get easy finance. किसमें इंक्लूड किया गया है? Priority sector lending नहीं. One more important, there's a list which is prepared by Ministry of Finance. Does anyone know? It has been given infrastructure status, harmonized list of infrastructure है. Harmonized list of infrastructure एक स्कीम एक ही होती है. उसको इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस दिया है लॉजिस्टिक्स सेक्टर को, so that it can get easy finance. Priority sector lending में. ठीक है. It might come into priority sector lending also, but इसको सबसे important इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस है. सी ठीक है. कंक्लूजन में क्या लिखोगे जब भी लॉजिस्टिक सेक्टर का आएगा? कंक्लूजन में यही लिखोगे, इट इज अ this sector has multiplier effect and this multiplier effect on all the other sector, and we cannot be a $5 trillion economy without development of logistics sector. It is a lifeline of our economy. It forms the core pillar of our economy. This sector has multiplier effect. ठीक है. multiplier effect on all the other sectors. An integrated logistic infrastructure with last mile connectivity would transform our economy. An integrated logistic sector with last mile connectivity would transform the entire economic sector.
चलेगा? आई थिंक सो आज हम थोड़ा शॉर्ट सेशन रखेंगे. टुमारो ऑल्सो वील हैव वन मोर इंपॉर्टेंट सेशन इफ, ठीक है. लेकिन आज के सेशन से इट वाज अ फर्स्ट सेशन, तो आई डू नॉट वांट यू टू नहीं एकदम ओवरवेल्म विद द कंटेंट. दिस सेशंस आर गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट वुड हेल्प यू थिंक, it would help you recollect, it would help you develop that structuring, it would help give you that confidence and interlinkages. हमने लॉजिस्टिक सेक्टर को GS4 के साथ लिंक किया क्या नहीं? पॉलिटी सर्विस डिलीवरी. इवैक्यूएशन इंफ्रास्ट्रक्चर इज पोर्ट से, पोर्ट्स पर शिप आई, लेकिन पोर्ट से टू टेक इट टू द मेनलैंड व्हाट वी रिक्वायर इज रेल रोड, दैट इज इवैक्यूएशन इंफ्रास्ट्रक्चर. एवरी टाइम विल अपडेट. हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए. सो देयर इज एक लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां क्लिक कीजिए, वेयर यू विल गेट एन आइडिया कि कब होगा. टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस मिलेगा हु आर अपीयरिंग फॉर मेंस की विद रिस्पेक्ट टू दिस कोर्स. ऑल्सो ऑन द वेबसाइट वी हैव अ फ्री कोर्स, आधार मेंस मेंटरशिप इनिशिएटिव. ज्वाइन दैट कोर्स, you will get access to all the important content with respect to current affairs. हमारे जो डायग्राम्स है, एग्जाम्पल्स हैं, हम उसमें अर्ली आपको एक्सेस दे रहे हैं थ्रू दिस आधार मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम. हमने ऑलरेडी GS2 का एक इंपॉर्टेंट आंसर राइटिंग स्ट्रक्चरिंग का सेशन उसमें डाला है बाय टॉपर, जिससे आपको पता चलेगा GS2 के आंसर्स कैसे लिखने हैं. तो ये वहां होंगे, ठीक है. अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है, डू शेयर इट विद ऑल द UPSC aspirants who are giving mains 2023. Secondly, we'll be coming with many such sessions and it would be with proof कि कौन से सेक्शन से आ सकते हैं. राइट फ्रॉम GS1 टू GS4 के टॉपिक्स हम कवर करेंगे. शेड्यूल क्या रहेगा, टाइमिंग क्या रहेगा, मैं रोज बताऊंगा आपको. टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़े रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो यू विल गेट एन अपडेट. यू वुड हैव एन मतलब, एंड द बेस्ट स्टूडेंट्स विल बी शेयरिंग नोट्स विद अस वुड गेट रिवॉर्ड्स. आपको शेयर करने हैं एट ऑन आवर टेलीग्राम नंबर, दैट इज 8830115524. इस टेलीग्राम नंबर पर आपको नोट शेयर करने हैं. द बेस्ट नोट्स वुड गेट रिवॉर्ड्स ऑल्सो, ठीक है. ठीक है, ठीक है. अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, डू लाइक द वीडियो, डू शेयर मी your views in the comment section and we'll come up with more such session. I want everyone to subscribe to the channel, share it to all the mains giving students so that we have the strongest community and your most of the important topics. आपको हमारे टारगेट 140 अफेयर्स का जो टारगेट 140 करंट अफेयर्स का जो सेशन है, आपको पता है कि कितना हार्ड वर्क लेते हैं, कितना एनर्जी, कितना रिसर्च करते हैं एक टॉपिक पर. यहां भी यही होगा. हर एक टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आप यहां सुनोगे, सिर्फ पढ़ने से नहीं हो रहा है, मैगजीन्स पढ़ने से नहीं हो रहा है, सिलेक्शन नहीं होगा, कोई शॉर्ट नोट्स पढ़ने से नहीं होगा. लेक्चर में जब तक आप सुनोगे नहीं, ये डायरेक्टली ब्रेन में जाएगा. आपके जो सॉल्यूशंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सॉल्यूशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव सॉल्यूशंस, रिफॉर्म्स, ये लिखोगे आप, इंप्लीमेंट करोगे, बहुत और अमेजिंग इनिशिएटिव्स आने वाला है, ठीक है. सो संकल्प बैच के लिए आज शाम में भी क्लास है आपका, तो डू नॉट वरी, शाम में भी यू हैव अ क्लास, ठीक है. होप यू लाइक दिस सेशन. अगर पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड वील हैव मोर सच सेशन. कल भी सेशन रहेगा सेम टाइम 11 या 11:30. टेलीग्राम ग्रुप पर समझेगा, एंश्योर कीजिए कल भी अटेंड कीजिए. थैंक यू.